Hello and welcome to Prime. We also welcome the viewers of G Punjab in the US. First, let's take a look at the headlines. All-out war of words between BJP and Congress. Sushma Swaraj says midterm poll will be government's doing. Singhvi slams opposition. Another twist in the Sahijdari voting rights case. Haryana takes opposite stand to centre and Punjab. Calls 2003 notification bad in law. Resolution seeking clemency for Afzal Guru stalled in Jammu and Kashmir Assembly. Supreme Court asks centre about delay in rejecting Bhullar's mercy plea. And Kupwara encounter enters second day. 5 militants killed in gun battle. Among the dead are an army officer from Samba and 2 special police officers. And now the news in detail. An all-out war of words has broken out between the BJP and the Congress over the Chidambaram issue, hitting back at the Prime Minister over his comments that the opposition was forcing early elections. The BJP reacted by saying that if there was a midterm poll, it will be due to government's own doings, slamming Dr. Manmohan Singh for defending Home Minister P. Chidambaram in the 2G spectrum scam. Arun Jaitley said BJP did not need to destabilize the government. It was collapsing under its own contradictions. Later, Congress spokesperson Abhishek Manu Singhvi accused the BJP of trying to rake up the issue to create an ambience of uncertainty and instability. The country expects, the nation expects from the Prime Minister that instead of protecting a tainted minister, he should be seen as protecting the truth. और इसलिए जो प्रश्न पूरे इस 2G के विवाद से और इस नोट में से निकले हैं, बेहतर होता कि उन प्रश्नों का वो उत्तर दे देते, वो उन्होंने आज तक नहीं दिया। यूपीए के कार्यकाल के 2 वर्ष जब पूरे हुए थे तो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर और यूपीए चेयरपर्सन दोनों ने एक वाक्य कहा था, वी वाउ टू फाइट करप्शन। हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि 4 माह के अंदर वो भ्रष्टाचार से लड़ने की प्रतिबद्धता मंत्रियों को बचाने की प्रतिबद्धता कैसे बन गई? 25 मार्च 2011 का वो नोट जो आरटीआई के माध्यम से देश के सामने आया है, उसमें पैरा दर पैरा इस बात की पुष्टि होती है कि स्पेक्ट्रम आवंटन में जो भी नीति अपनाई गई, जो भी मूल्य निर्धारित किया गया, उसकी केवल जानकारी ही वित्त मंत्री को नहीं थी, बल्कि उनकी पूर्ण सहमति थी। यानी जो अपराध राजा ने किया है, हूबहू वही अपराध चिदंबरम ने भी किया है। For the last 2 weeks you are having absolute cacophony just to create an ambience of instability, an ambience of uncertainty, because they know that what the Janta did not give them, they must get through unauthorized means like this. I have a very strong objection on behalf of the Congress party that the press release today by the BJP is nothing but a verbatim summary of Dr. Subramanian Swamy's arguments inside court, and this whole drama and misinformation that while Mr. Raja in jail and Chidambaram not in jail, do they know what they are talking about? Mr. Raja is accused of criminal offences, and I am not suggesting that he is guilty at all, nor am I suggesting that he is innocent, that the court will decide. Mr. Chidambaram and his ministry opposed first come first serve and suggested auction. Mr. Raja and his ministry cited a 2003 January cabinet note saying this issue of pricing need not go to the GOM. It need not go to interministerial consultations. Does the fact that Mr.
Chidambaram did not resign from the cabinet or did not fight, make him criminally liable? Any resolution, if at all, seeking clemency for Afzal Guru will have to wait. The Jammu and Kashmir Assembly today saw stormy scenes as the petition on a resolution was to be taken up. The result, the House was adjourned and any such resolution can now only be adopted in the next session. कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार वहां भी इकट्ठे है, यहां भी है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब का इलेक्शन हो, राज्यसभा का उन्होंने वोट दिया, चाहे अभी एमएलसी की 2 सीट्स का इलेक्शन हो, ये तो सारे इकट्ठे थे इसमें। बट अनफॉर्चुनेटली जिस चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पे इस बात को हवा दी थी, ही हैड क्रिएटेड सिचुएशन, तो उन्होंने इसमें फरार अख्तियार किया। वो इसमें से जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को आदत है, कुछ कहते हैं करते कुछ। खासकर जो आज का जो अफजल गुरु के ऊपर जो रेजोल्यूशन था, पैंथर्स पार्टी ने इसको लीगली चैलेंज किया है। हम कहते हैं कि रूल 180 के तहत जो हमारे स्टेट का असेंबली का रूल प्रोसीजर बुक जो कहती है 180 के तहत कोई भी मसला जो सबजुडियस हो उसको असेंबली के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता। हमने राइटिंग में भी स्पीकर को दिया और कल हमने प्रेस मीडिया में ये बात कही और उसके ऊपर पैंथर्स पार्टी बिल्कुल स्टैंड करती। हमारे साथ श्रीनगर से फोन लाइन पर जुड़े हैं शेख अब्दुल रशीद, जो किश्तवाड़ के लंगेट से इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और जिन्होंने अफजल गुरु की क्लेमेंसी के समर्थन में जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में प्रस्ताव पेश किया है। रशीद जी, क्या ऐसे समय पर जब अफजल गुरु की माफी की याचिका राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, ऐसा रेजोल्यूशन लाना जायज है? बिल्कुल 100% जायज है, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कानून के दायरे के बाहर हो। असेंबली जो होती है वो लोगों के जज्बात और एहसासात, उनके सेंटिमेंट्स की तर्जुमान होती है। और जहां तक रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, हमने सिर्फ असेंबली का जो मूड था, लोगों का जो मूड था, उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए जमहूरी तरीका इस्तेमाल किया। फिर आगे राष्ट्रपति के हद इख्तियार में है कि वो इस रेजोल्यूशन का क्या करते हैं। रशीद जी, आपको नहीं लगता कि अगर असेंबली इस रेजोल्यूशन को पास भी कर देती है तब भी माफी की प्रक्रिया पर इसका कोई खास असर नहीं होगा? वो तो सही है, लेकिन कम से कम कश्मीरी लोगों को लगता कि किसी ने उनके जज्बात की बात की। असेंबली जो है इसकी एक क्रेडिबल इदारा है, वरना आप देखते हैं कि जो हमारे अलगाववादी लोग हैं वो कहते हैं कि ये असेंबली जो है ये मतलब पुप्पट है, कठपुतलियां हैं, ये इनको हर हुक्म दिल्ली से मिलता है और उसी तरह से चलती हैं। तो हमने अपने अमल से जो आज हमारा जो काम काज करने का ढंग था, हमने उनकी बातों को सही साबित किया कि हम अपने में कोई मतलब वो फैसला ले नहीं सकते। और जब तमिलनाडु में ऐसा हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? 2 रामविहार क्यों? रशीद जी, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि अफजल गुरु का फेयर ट्रायल शायद नहीं हुआ है? आफ्टर ऑल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, जहां एक तो 2 चीजें हैं। जिस कानून ने किसी को मौत की सजा दी है उसी कानून में यह भी दर्ज है कि आप उसको जो हमारे प्रेसिडेंट है उसको माफ भी कर सकते हैं। ये तो एक रुख है तस्वीर का। दूसरा रुख तस्वीर का यह है कि जहां तक आपने ये कहा कि मतलब जो उसको सजा, जो उसको वो डेथ सेंटेंस हुई है, बाकी चीजें हुई है, उसमें आपको जरूर एक बार वो जजमेंट पढ़ लेनी चाहिए। उसमें यह लिखा है कि अगर से अफजल गुरु के खिलाफ कोई बराह रास्त शहादत मौजूद नहीं है, लेकिन मुल्क के शहरियों के जज्बात को मुतमईन करने के लिए अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए। तो शायद ये अच्छा नहीं है कि हम सिर्फ लोगों के जज्बात को मुतमईन करने के लिए किसी को फांसी दें। और अगर अफजल गुरु के मारने से कश्मीर की समस्या हल होती है तो मैं चाहता कि जिन्हें जो कर दे सो करते, लेकिन ऐसा करने से आप फिर यहाँ पर एक और आग लगा रहे हैं। जो कश्मीर 20 बरस से जल रहा है, अब आगे और 30 बरस तक जल जाएगा। रशीद जी, जो पार्टीज असेंबली में हंगामा कर रही हैं, आपको लगता है कि वो सिंसियर है आपकी रेजोल्यूशन है इसको पास करवाने में? आपने देख लिया, मैं हैरान हुआ कि मैडम महबूबा जी क्या कह रही थी। आज तो पीडीपी, एमसी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबों ने इन्होंने मशवरा करके आपस में एक मैच फिक्सिंग की तरह यह फैसला किया था कि रेजोल्यूशन को हर हाल में फेल करना है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे लीडर ऑफ द हाउस जो हमारे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब और जो पीडीपी की सरबराह लीडर ऑफ अपोजिशन है, जैसे वो कोई फिल्म देखने के लिए किसी सिनेमा हॉल में आए थे। उन्होंने एक भी लफ्ज नहीं बोला, वो असेंबली के अंदर खामोश रहे। बाहर आके पता नहीं लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अटानवी देंगे, सेल्फ देंगे। जो लोग एक मामूली करारदाद पर अपनी जबान खोल नहीं सके, वो तो भला क्या खाक कश्मीर का मसला हल करेंगे। रशीद जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।
Staying with the valley, 8 persons including an army officer, 2 SPOs and 5 militants were killed in a gun battle in North Kashmir's Kupwara district. The gun battle is still going on. The encounter broke out at Avatkul forest area of Karalipura yesterday when a joint search operation was launched by the police and the army following information about presence of heavily armed militants. The deceased officer has been identified as Lieutenant Sushil Khajuria of Sangwali village in Samba district of Jammu. Brigadier A.L. Chavan said the area is mountainous, covered with dense forest with no habitation and steep cliffs, making the operation very difficult. ये आतंकवादी ग्रुप जो तकरीबन 6 से 7 आतंकवादियों का है, इसको पूरी तरह से घेर लिया गया। हमने तकरीबन 5 आतंकियों को मार गिराया है। उस एरिया में अभी तक शायद 2 और आतंकवादी बचे हुए हैं, जिनको कि शीघ्र ही खत्म कर दिया जाएगा। And in another twist in the Sahijdari voting rights case, the Haryana government today told the Punjab and Haryana High Court that the 2003 notification of the centre barring Sahijdaris from casting votes in the SGPC polls was bad in law. The Haryana government has now taken a stand opposite to that of the centre and the Punjab government. The Supreme Court today asked the centre to explain a delay of over 8 years in deciding the mercy plea of convict Devinder Pal Singh Bhullar. He had been awarded the death penalty for triggering a bomb blast in Delhi in September 1993, killing 9 people. A bench headed by Justice G.S. Singhvi asked the centre to file by October 10 an affidavit explaining the delay in deciding Bhullar's mercy plea of 2003. The mercy petition was rejected by the President in 2011. It's time to take a short break. Do stay with us. Welcome back after the break. Members of as many as 35 organizations staged a protest rally in Chandigarh today to express their anguish on the passing of 2 laws by the Punjab Vidhan Sabha last October. Various trade unions, labour unions, farmer and even students unions are taking part in the protest. The Prevention of Private Property Damage Bill 2010 and Punjab Special Security Group Bill were passed in October last year and are awaiting the Governor's clearance and signatures. According to the legislation, for holding any protest, the district magistrate's approval would be mandatory. To discuss this issue, we are joined in the studios by Hardev Singh Sandhu, President of All India Kisan Mazdoor Jathebandi, Karam Singh Sekha, a leader of the Punjab Students Union, and R.S. Ghuman, SP Operations, Chandigarh. तो डिस्कशन बहुत बहुत स्वागत है। संधू साहब, इस